everyone, welcome back to my channel Girlnxtdoor. आज एक्चुअली आफ्टर 2 वीक्स आई एम शूटिंग बिकॉज अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा आई वॉज आउट ऑफ टाउन। मैं छोटे से ब्रेक पे गई थी। मैंने एक छोटा सा वीडियो भी डाला था हिमाचल में जब मैं थी खजियार पे, तो वहाँ से मैंने छोटा सा एक वीडियो डाला था। अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया है वो मेरे इंस्टाग्राम पे IGTV में भी है एंड ऑल्सो यूट्यूब में भी है, तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल इज़ Girlnxtdoor.Smriti। प्लीज़ फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम फॉर रिसेंट अपडेट्स। बहुत सारे ट्रैवलिंग के वीडियोस आएंगे गाइस, सो स्टे ट्यून ऑन दैट। और आज मैं मेकअप करने वाली हूँ, तो एकदम बेयर फेस में बैठी हूँ। आफ्टर ट्रैवलिंग थोड़ा सा रेडनेस आ गया है यहाँ पे, थोड़े से बम्पी स्किन्स है यहाँ पे। सो आई ट्राई आउट, बहुत कम हो गए हैं बट थोड़े से अभी भी है। सो लेट्स स्टार्ट, स्किन केयर कर लेते हैं। सो एज माई फेस इज लिटिल अनइवन हियर, so I'll use the aloe vera gel. This will give a cooling effect because यहाँ पे मुझे थोड़े इरिटेशन हो रहे हैं। Now recently I visited Kashmir. सो मैंने ये वहाँ का एक लोकल ब्रांड ट्राई किया है। सो दिस इज़ अ सैफ्रॉन बेस्ड क्रीम एज द शॉपकीपर सेड टू मी। सो एज पर द की इंग्रेडिएंट्स मुझे ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं लगा कि इट इज़ हार्मफुल। सो दिस इज द की इंग्रेडिएंट्स। सो ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इसका। अगर आप क्रीम लेते हो ना तो छोटे छोटे सैफ्रॉन के स्ट्रैंड्स भी आते हैं। यू कैन सी दिस। पहले आई विल डू द आईब्रो। सो गाइज द पार्ट ऑफ आई मेकअप इज डन। फेस कर लेते हैं। आई विल यूज अ प्राइमर।
बिकॉज कुछ पार्ट में मुझे थोड़ा सा रेडनेस हो गया है बिकॉज ऑफ दैट ओपन पोर्स एंड आई डोंट नो व्हाट पम्प्स. सो आई यूज अ ग्रीन करेक्टर फर्स्ट. आई यूज दिस वन. थोड़ा सा रेडनेस इवन हो जाएगा. एंड अंडर आइज पे मैं थोड़ा सा ऑरेंज करेक्टर यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि आई मेकअप बोल्ड है, इसीलिए यहाँ पे कोई शैडो नहीं होना चाहिए. आई यूज़ अ लिटिल बिट ऑफ पाउडर क्योंकि ये ग्रीन करेक्टर और ऑरेंज करेक्टर जो मैंने यूज़ किया है वो फाउंडेशन के साथ मिक्स ना हो जाए, इसलिए. नहीं तो आपका फाउंडेशन पूरा कलरिंग हो जाएगा और आपके फेस पे भी अच्छा नहीं लगेगा. अभी नीचे का करना बाकी है, बट बिफोर दैट आई टेंड टू क्रीज माई आईज. आई लेट इट सिट फॉर 2 minutes and then I will brush it off. स्ट्रक्चर नहीं, थोड़ा सा जस्ट एक शैडो इफेक्ट आ जाए. नाउ विद अ बिग फ्लफी ब्रश मैं ये जो है क्लीन कर देती हूँ. सो एज ऊपर बहुत ही ज़्यादा ब्लू है तो I'll use this blue काजल. और डार्क साइड जो है मैं इसको थोड़ा सा स्मजिंग इफेक्ट कर दूंगी विद द ब्लू आई शैडो. इसको थोड़ा एज पे भी लगा दूंगी. दो आई हैड यूज द ब्लैक आईलाइनर. कॉर्नर्स को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो स्मोकी इफेक्ट नहीं आएगा. सो इट्स टोटली ब्लू. तो मुझे लगा कि थोड़ा सा डैश ऑफ पिंक इन द कॉर्नर ऑफ द आईज विल give a pop of color. So I'll use a little bit of bronzer. So मैंने बहुत ही लाइट ब्लश यूज किया है, ज़्यादा पिंकिश नहीं होना चाहिए, तो दोनों को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा. सो द मेकअप इज डन. लिपस्टिक एंड मस्कारा बाकी है. आई नो गाइज मस्कारा बाकी है. सो बिफोर दैट आई यूज द मेकअप फिक्सर. कभी कभी क्या होता है मेकअप फिक्सर के टाइनी ड्रॉपलेट्स आपके फेस पे दाग हो जाता है जो लाइट में दिखता है. ट्रिक इज दैट यूज अ स्पंज, जस्ट डैप कर दीजिए.
So now the mascara. It is better to use a false lashes for this bold eye makeup, but unfortunately I don't have right now, so I'll use a mascara. So I'm using the L'Oreal Lash Paradise. So it is my favorite one, but ये waterproof है. So I'll give double 2-3 coats of mascara ताकि मेरे lash थोड़े से वॉल्यूमनेस लगे और लंबे भी लगे, क्योंकि मैंने फॉल्स लैशेस यूज नहीं किए हैं. यू कैन सी द डिफरेंस, सी दिस एंड दिस. इट्स अ न्यूड ब्राउन. All done. So you can get ready with this blue glam makeup and go on a party. So please बताइएगा कैसा लगा. Please follow me on Instagram and also please subscribe to my channel Girl Next Door for a next video. See you soon guys. Bye bye.